Welcome once again to my channel, the guy. On 3rd of December 2020, an online seminar was organized by Mr. Afaq Said of SRO on the occasion of International Day of People with Special Abilities. So let's get started. Before I show you the conference, I want to tell you that the conference was in many languages. I mostly spoke in English, but there was other languages like Urdu and Kashmiri, which is my mother tongue. So let's dive into the conference. अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको सबको पता है, मैं कर कशिर पॉइंट का बेसिकली कशिर खतर प्रोग्राम ताकि कशिर मज गस वाइड स्प्रेड पूरा सारी हकन ये बूजित। आज दो अच्छे वनान इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी यम यम लुक यमन केस स्पेशल एबिलिटीज स्पेशल हुनर तिन खतर तिमन लुकन हिंद खतर ये दो। तो अत मुतलिक प्रोग्राम थोमुत दोहले मुनक़द कोरमुत। तथ मज दुत यमन बोजनस बोजनस मज थोड़ा बहुत कोताही तिमन प्रॉब्लम बोजन तिमन कर हेयरिंग एड कन मशीन डिस्ट्रीब्यूट बे कर तिमन लुकन यमन पकनस मज प्रॉब्लम तिमन जरूरत तिम लोर पकन लोर तो यम तिमन मदद मिलान पकनस तिमन कर तिम डिस्ट्रीब्यूट बे कर यमन नाबीना तिमन जरूरत तिमन स्पेशल स्मार्ट स्टिक्स तिम कर डिस्ट्रीब्यूट। अस मिल असल अत मतलब पान कर तवक्का कि युथ असल रेस्पॉन्स मिले कि कह तथ मज ति कि यमो मतलब तिमन तिमो आज मे बसान कल तिम तिहद या कि खुशी हूं इजहार कोर तिमो कि तिमो त्रो बड़े असन। सो अस फोटो तह शेयर कोरमुत अकिस बच्चे सुंद आसान युथ तम बूत तमिस पुरुष वो बोजान क्या दोपन अहन आ बह सोरे बोजान। तो उसी तथ यह तमिच कड़ी ऑनलाइन प्रोग्राम अत ऑलरेडी गडे थोमुत यह ऐलान कोरमुत कि गडे फेसबुकस पे लिखमुत कि करो शाम 7 बजे यह प्रोग्राम फेसबुक लाइव तथ सिलसिलस मज वनकस सारी समित अस वनकस हमजा यम स्पेशली एबल्ड यमन मज तीज सलाहियत कि तुम बूझो पान यह जेवि यमन कर हेल्प वो वनस मज वालिद सब तम सम कर हेल्प। अस डॉक्टर अल्ताफ, अस डॉक्टर दीबा, डॉक्टर बुरहान, डॉक्टर टीका रशीद, डॉक्टर ओवैस यम दिन पन इंट्रोडक्शन यम दिन पन तारुफ पाने। गडनथी वन बह हमजा साहबस। हमजा साहब अब स्टार्ट करो। हमजा साहबन वो दोपन बह हेक मज मज थोड़ा बहुत कशुर कर मगर अगर मैं डिफिकल्टी आई बह कर उर्दू तो अंग्रेज पे कत। हमजा साहब Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I am I am honored to be here with the program. My name is Hamza and I was born with cerebral palsy. There is a thing in Kashmiri, the part once in years could I say, and I hope you could understand what I said right now. But for me, disability is not a disease. It is a part who I am. So as a disabled child, I didn't face any issue. They, they are things I can't do, like
walking normally or speaking like everyone. But my disability did not stop me. I mean, what I wanted to do, I can do. Like I'm passionate about technology. I edit videos and upload it on YouTube. I mean, going with the sector जो मैं चाहता हूँ. And I want to talk a little bit about the normal people who think who think about disability. They think they think we can't do anything. Can लोग सोचान ये चुनाव का हमें चुनाव but give give me a chance to prove my ability. Maybe we can do something that can change, that can that can engage people and change their perspective. But as a disabled person, it didn't stop me. I found my future in technology, and and, and I think no one knew, including me, that I would edit my videos without any training or any assistant. I mean, I completely edit on my own, and sometimes I think no one can stop me. And I want to tell you, give give us a chance. Maybe we can make the world. Maybe we can change the world. Thank you. Wonderful. And I hope you understand. You could understand everything what I said. Yes, Hamza. You were clear. Thank you. Everything You was clear, loud and clear. Thank you. thank you. You were Thumbs up. welcome. Thank you for. Thank you, Hamza. Thank you very much. Thank you, Hamza. Do you want your father to chip in and tell us something about you in more detail? Of course, if he wants to. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. This is Sayyid Hamid Kamli, Hamza's father. Let me start with the Quranic verse. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allah made us. He is the creator and he knows the best about his creation. Indeed. So the first thing what I would like to convey in this seminar, that we have to denounce the terminology of disability on global level. Nobody is disabled. Of course, Allah made us. If somebody is deprived of any ability, but he has been blessed with other capabilities,
other potentials. So saying disabled, I think this is discouraging these people. Instead of disabled, we can use people with special needs or physically challenged people. We are making them the victim of inferiority complex if we call them disabled. So this is my suggestion, that on our level, we have to start a campaign about the terminology, about this term of disability, or we call it in Urdu ma'zoor, or in Arabic we call it mu'awwiq. Instead of using this term, disability, we can use the best alternative words for this portion of our society. Second thing that I would like to tell you, being the father of a person with special needs, that these people need a lot of support, our attention. They deserve our support. They deserve our appreciation to prove their potential. As I said, that if somebody lacks something, but Allah has blessed him with other specialties and with other potentials and with other abilities. Like you might have heard from Hamza, that you see, without any help, without any training, he himself thought that he is having the potential in doing something technology, and he did it. Now he is able to prepare his videos of his own without any help, without any assistance from us. The only thing which I could do as a father or as a guardian, that whatever support he needed from me, I provided it. So this is what the people who are having these types of shortcomings, they need to be supported. Kashiri mazit ken es gumut chuk bant kashir padi ashe recipe banaymat siman kol zor on long. Why should we call them like that? And we see agar es won ak on ak emishu khodayan gosh nimut magar you can understand it. It's your experience. Everybody knows that these people have more the higher power of high memory power they have. So these things we have to think, and on to give a proper support to this folk of our society. We need to give them the support and appreciate their potential, and give them an idea that they are not useless people. So you mazur, mu'awwiq, disabled, why should we use these terms? Let us use a term that they, of course, they deserve our support, they deserve our appreciation, they deserve our attention. So these things should be given to them and provided them. Inshallah, they will prove their potential. This is what I say. And I'm thankful to every one of you for attending this conference and giving your attention and your time, and hope, inshallah, this conference will prove as a milestone to improve their lifestyle, their quality of life, and a good direction to change the world, as Hamza said. Assalamu alaikum. Thank you very much. Thank you. Kamri sahab, shukriya. Thank you very much. तो बकर गुजारिश अल्ताफ साहबस तिम करन थोड़ा बहुत ऐसे अग दिन पन इंट्रोडक्शन तो बे करन थोड़ा बहुत थोड़ा नॉलेज दिन थोड़ा बहुत ये दिन इंफॉर्मेशन, because he has been working for people with special abilities. इनको तो काफी एक्सपीरियंस है इसका, इन्होंने तो काफी काम किया है इस पे, तो हम थोड़ा बहुत इनसे भी सुनना चाहेंगे। अल्ताफ साहब। Janab, thank you very much. Shukriya, Janab. It's an honor to be here with this forum, and I suppose everybody is a specialist in his field, and it's good to get multidisciplinary approach. And I am really happy that we started with a very motivational story, starting with Hamza. I know I have met Hamza a few times, so I have seen him here. And really, when you come across these people and you see how good their abilities are,
Ith ken Hamza sab Hamid saban won ki agar asa kan nabina chu emish achin hun ti gumutan he has difficulty in seeing magar emish automatically baki imzan ability chasan im chemis Allah Taala nasan accentuate karmatan so he can perceive things more. So I could see Hamza had he has his own YouTube channel and wagara. Later on maybe in the program he will tell us about his channel and we can subscribe to his channel. I would like to share my screen. My name is Dr. Altaf Shah. I have been interested in working with people with disabilities since almost 10 years now, more than 10 years. I have been out of my country, my place. I have been out since a long time, my education, and then work. And I've been working in different places, and mostly in and around Riyadh. So, but we all are connected to our place by our land, our water, our air. And I think most of my presentations, in fact, all of them, I use this picture because it represents my roots, it represents my air, my water, and my land. Today we are talking for a very specific, subject. But it's quite difficult to adjust the terminology. I specialize in special care dentistry, which is a very new and rare branch, even in the West. I mean, it was specialized as a separate branch in UK in 2008. I did my certificate in special care dentistry in 2009 from UCL Eastman. The Arches Vanan is a need for the needy. Currently, I'm working. I was, honored to start the special care dentistry clinics in Riyadh. We started in 2018, only recently. But in India, it is still Kashir Mazan. It's still in fancy, or you could say, we need more to start this project. I've been working here, maybe takriban 10 vari special needs patient and sitten kaam karan. So I was instrumental in setting up clinics for special needs people, or what we call a special care dentistry in 3 universities, Al Kharjas, Mazak, Darul Uloom, and now currently at Riyadh. I'm also I work also as a consultant for what is called as Disabled Children's Society. As we are many people, they still fight, or they are like lobbying very hard for the terminology, but still, Atmachivara difficulties, because sometimes you may not be able to understand the terminology catches. So still we are, some areas and some associations are still continuing with the old terminology. As my father was a doctor, and always I learned from the textbook of Harrison Athmachi Godnyuk Jesus, the greatest quality of a clinician is his interest in humanity. Itis kalasna ak doctor ak insaniyatas mazan interest hai, I don't think his job is fulfilled or satisfied. Itis kalasna, you have to be basically a human, and then you can be a doctor. You cannot be a doctor if you do not have humanity in you, or even doctor, any healthcare professional. Special care groups, we have physical disabilities, we have medically compromised, we have learning disabilities, mental handicapped, and other terminologies were used. And currently we are issue focused on disabilities. So mostly we are including people with physical disabilities, learning disabilities. Later on, Dr. Deepa will shed more light on these things, because they have intellectual disabilities, physical disabilities. But in special care, otherwise we have lots and loads of people. We have geriatric syndromes, neurological impairment, even socially deprived. So the theme and the aim of the World Day for Disability, or people with disabilities, issue 3rd December har pura dunyas maziman commemorate karna, to make sure that these people are not ignored, or they are remembered. COVID. Last year we had a campaign, locally we used to campaign for the 3rd December planning, we used to have interaction with people. But unfortunately this year, because of the COVID and social distancing, program. So it was actually
an opportunity for me to interact with people back home. Kashir Mazan, Kashir Manch mein basan zyada neglect, especially because of the conditions that we are living through. Tamalav chase baki mushkilat, especially Vanda, and then the COVID has actually added lots of miseries and lots of stories that are very, very difficult to be remembered and so on. The theme is World Disability Day. It is like not all disabilities are visible. Many people, they are intellectual disabilities, they feel shy to report their problems, or sometimes even using will start us there was a lot of there were a lot of barriers in the society. Hajj is Timai, Arabic, social barrier. Ki Yatmazan Ak Yuzan Nafar Asi, Misasikan Nafar disabled, ya specially abled, ya wheelchair bound. You should Samjan Ak Hajalat ki Kitchen Kadan Beneber, Mikaman look never again. So Meshbasa you should sign society must the Ak Bodbar Ak element, Yatmazan is Kushish Karanke, Agrasameka Nafar, especially intellectually, agar able chuna, miss chunat, it's a mental ability. Public so this is one sort of the thing that is that we want to break the barriers. The main aim is to raise awareness among general public and stakeholders, chahe government chu ya institutions chu, facility healthcare providers. It can to Western there is a Disability Discrimination Act. Yatmazan footpaths, buildings, malls, cinemas, all the areas where any general person can go, a disabled or an especially abled person should be able to go. But unfortunately, Ashtinasari facilities is available back home, Kashir Mazan. But still, there are agar campaigns at least we can make some changes. Kunjai ramp banaun, kunjai elevators banaun, kunjai facilitate hi karan. So that all is included in that. So imanch beyaz varya problems actually that can be solved. That doesn't need many, that don't at khatar of tita khas cheese bakar ke. Sometimes it is a small thing that may facilitate their access. We had these clinics and we had illuminations and signboards we had to change and we had to put for these people. As you know, should challenge, it's not the tooth or the oral health, it is the patient himself, because sometimes you get patient, for example, a case which mitochondrial disorder, I mean, sense, he couldn't perceive, he couldn't see, he couldn't hear, he couldn't. So sometimes you think, what can I do for this patient? But how can I can't even put him on the chair. So this is the challenge. More than that challenge, we have social issues. For example, I use this picture for my presentations, where you can see, you can assume that the patient is on the wheelchair, but that's not the truth. The patient is the son who is having Down syndrome, and the mother is accompanying in a wheelchair. Problem mother accompany wheelchair. So sometimes we ignore these social issues. I saw them in the parking a lot, and I thought I thought maybe she's a patient with somebody. Ultimately, they came to my clinic, and I realized that the patient was the person who was pushing the wheelchair. So it is not always, social issues are very, the things that sometimes we ignore as a healthcare practitioners. We don't realize. Sometimes they get late for the appointment and other things. So we do take care of these things. We try to do these campaigns all over Saudi Arabia, especially with children with different areas. Maqsad was barrier in society to break karan. Very important that you involve, for example, if you are working in an educational institute, you involve the students, the caregivers, and so on. And this was the last year, 2019. We had these magicians and TV artists. Imzan Pan is specially abled, and they performed live with the audience. This year, unfortunately, the things couldn't be done. Thank you very much. And at the last, I will say that be the reason to smile today, because pura life badlit came, but we can try to make their day.
Thank you. Thank you, शुक्रिया अल्ताफ साहब. Dr. Owas साहब, जी. आपका, yes, over to you. Thank you, Afaq Sab. Assalamu alaikum and a very warm good evening to everyone here. My name is Dr. Owais Makhdoumi. I'm ENT specialist at DH Ganderbal. So today is the World Disability Day. जो हम like I'll mostly speak in Urdu and Kashmiri. I think crowd is mostly Kashmiri, viewers are Kashmiri. So हम जो बात कर रहे हैं disability की, तो being an ENT specialist, यहाँ पे जो हम देखते हैं ENT में mostly we deal with hearing disabilities and speech disabilities. तो when we talk about hearing disabilities, तो इसमें basically दो curves होते हैं, या तो childhood disability होती है या तो adult onset होती है, which is basically called presbycusis, which starts after the age of 65. So what I want to tell everybody is early detection, and if we try to inform people, like if people are more aware about it, like basically I have worked during my PG days as well, I have worked on this. मैंने काम किया हुआ है hearing loss पे, या कशिर पढ़ वना गुब बोजुम. तो there are different reasons, बहुत सारे reasons होते हैं क्यों hearing loss क्यों होता है. So अगर हम बच्चे में देखें उसमें different causes होंगे, अगर हम बड़े में देखेंगे elderly population में देखेंगे उसमें different causes होते हैं. तो hearing loss as we see conductive हो सकता है, sensorineural हो सकता है. Conductive is जो बाहरी जो हम देख सकते हैं एयर का कंपोनेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी या कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, परफोरेशन आज से ज्यादा आज से इन्फेक्शन आज कुछ चीजों गोमो, तो दैट कैन बी करेक्टेड. तो मोस्टली हम देखते हैं एयर वैक्स होता है, तो वी क्लीन दैट, क्लियर करेंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा. तो नाउ कम्स द सेंसोन्यूरल कंपोनेंट. मैं ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ बिकॉज इट हैज मोर मेडिकल कंपोनेंट, मेडिकल एस्पेक्ट जो हमें नहीं चाहिए. हमें मोस्टली अवेयरनेस चाहिए. दिस प्रोग्राम हियर इज मोस्टली अबाउट अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटी. हम लोकल मैसेस को कैसे अवेयर करेंगे ये डिसेबिलिटी क्या है और हम फर्दर कैसे इसको हेल्प कर सकते हैं. तो वी आर डीलिंग विद सेंसोन्यूरल, यथ वनान छ योस कानच राग छ योस दिमागस तान छ गसान तथ छ प्रॉब्लम आसान. एज रिलेटेड है गसित, कुन इन्फेक्शन सित है गसित, ट्रॉमा आस कस वोतमुत तम वजह सित है गसित, तो किसी वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो गई. तो व्हाट हैपेंस कि अगर विद इन 2 वीक्स में हमारे पास आ जाती है तो इट कैन बी ट्रीटेड. तो 2 वीक्स इसकी एक ड्यूरेशन है. अगर इस 2 वीक्स तक पेशेंट एक सर्जन या ENT स्पेशलिस्ट के पास आ जाता है, वी डू अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड विद मेडिकेशन प्रोग्नोसिस बहुत बेटर है. बट व्हाट हैपेंस मोस्टली इज कि हमारे पास पेशेंट्स साल भर 2-3 साल बाद वो हमारे पास आ जाते हैं. क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाती है. व्हाट हैपेंस कि हम कैसे ये देखेंगे कि हमारे पास जो पेशेंट हैं या उनके घर वाले हैं, मोस्टली उनके लिए होता है, वी शुड नोटिस द पैटर्न. पैटर्न इज कि इनके फोन पे वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ता है. कि नॉर्मली जो आप अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप अपने का पेरेंट को दे रहे हैं या अपने अंकल को दे रहे हैं, वो बोलेंगे कि वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ रहा है, या टीवी का वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ रहा है, या कॉन्वर्सेशन जो हो रही है वो उनको समझ नहीं आ रही है. सो देयर इज अ डिफिकल्टी इन कॉम्प्रहेंशन अगेन. तो जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उनको वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है. सो दिस इज वन मोर कॉम्पोनेंट. अगर हम ये चीजें अर्ली ऑन से देख लें तो वी कैन गेट इट टू अ पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट. तो इसमें एक कॉम्पोनेंट है, अगर 2 वीक्स तक हमारे पास पेशेंट आ जाता है, वी कैन गेट इट ट्रीटेड, वी कैन ट्रीट इट विद प्रॉपर मेडिकेशन एंड प्रोग्नोसिस आर मच बेटर. बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स आफ्टर 2 वीक्स. अगर उसके बाद पेशेंट हमारे पास आता है तो वी जितनी प्रॉब्लम हो चुकी होती है हम वो ठीक नहीं कर पाते, बिकॉज इट्स अ सेंसोन्यूरल डेफनेस. न्यूरल डेफनेस उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है. देयर इज नो सर्जरी, देयर इज नो मेडिकेशन एज सच, देयर इज नो लिटरेचर जो उसको सपोर्ट करेगा, जो उसको ट्रीट कर सकता है. But what can happen is we can prevent it from further deterioration. Auditory neuropathy, like mostly कश्मीर में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे डायबिटीज बहुत कॉमन है, hypothyroidism बहुत कॉमन है. So what we have seen, even I have myself published a paper on effect of diabetes in early onset
सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, जिसका मतलब ये है जिन पेशेंट्स में डायबिटीज होता है, अनकंट्रोल डायबिटीज होता है, उनमें अर्ली ऑनसेट सेंसोन्यूरल तिमन मश रगी वहां कमजोरी अर्लियर, अगर उतान 50 years पे मैं साहब सारे को इसमें बटन 45। मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब सिंस यू आर मेंबर ऑफ मेडिकल बोर्ड, तो जी यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है जिसको डिसेबल, मतलब डिसेबिलिटी, किसी को डिसेबल मानने के लिए सरकार ने क्या क्राइटेरियाज रखे हैं, एंड जी जी व्हाट आर द बेनिफिट्स, मतलब सरकार ने क्या रखे हैं यहाँ पे, मतलब उनके लिए क्या फैसिलिटीज हैं। सो ये थोड़ा सो बहुत हमें लोगों को इसकी थोड़ी बहुत जानकारी देना जरूरी है। जी जी सो बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में जो हमारा सीएमओ ऑफिस है, एंड आई एम प्रीटी श्योर हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना एक बोर्ड होता है। तो वहां पे जिन जिन को ये प्रॉब्लम है, पीपल हु फील कि उनमें सुनाई में दिक्कत आ रही है एंड वो उनको हेयरिंग एड की जरूरत है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जा सकते हैं, अपने डॉक्टर साहब के पास जा सकते हैं जो ईएनटी वहां होंगे, वो उनको इवेलुएट करेंगे। आफ्टर प्रॉपर इवेलुएशन हम उनको एक फॉर्म वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं जहां पे उनको फ्री हेयरिंग एड मिल सकता है, जो इनके मतलब जो बाहर से आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गवर्नमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर है, उन्होंने कुछ एसेंशियल जो पेशेंट्स हैं जिनमें सीवियर लॉस है, जो आपके सर्जन साहब उनको लिख कर देंगे, तो उसके बाद कुछ आपकी मोमेंटरी हेल्प भी हो जाएगी। यू कैन गेट सम कैश, जो मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे उनको कैश मिलता है। सो ये गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जो आप तभी अवेल कर सकते हैं वंस यू अप्रोच टू योर डेस्क, जो आपके क्या कहते हैं उसको, सीएमओ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ ऑफिस हो सकते हैं, वहां पे बोर्ड पर्टिकुलर बैठता है, आप वहां अप्रोच कर सकते हैं। वहां पे जो डिफरेंट स्कीम्स हैं यू कैन गेट टू नो। अगर हेयरिंग एड है, डिफरेंट टाइप्स के हेयरिंग एड्स होते हैं, वो आपको मिल सकते हैं। जैसे आफाक साहब की एनजीओ है, इन्होंने आज डिफरेंट हेयरिंग एड्स भी दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इफ अ पर्सन इज गिवन अ हेयरिंग एड, मतलब आख नफर गोब बोजान, एंड इफ यू गिव दैट पर्सन अ हियरिंग एड, आप देख सकते हैं there's a hell lot of difference. वो सब कुछ सुनाई देगा, his life changes. What I have seen personally, patients who are suffering from sensorineural hearing loss, या तस वनान छ कानन छ ज़र गसान, मतलब यमस बुजुर्ग छ गरस मज आसान, तिमन छ पेवान, तिमन छ obviously age induced hearing loss गसान, तिमन येल hearing aids छ दिवान, वो खुशी different होती है। Otherwise they go into depression. तिमन छ तरन फिक्र अस हेको न यमन मज बिहती, अशन कथ तगान करनी, अशन कथ तगान समझनी, तिमन मज छ जिंदगी में चेंज यवान। सो दैट फिर हेयरिंग लॉस तो वहीं रह जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आई थिंक हमारे जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर साहब हैं वो इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। सो इफ अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ हेयरिंग लॉस, जो ये बहुत डिसेबिलिटी है, जो WHO भी वहां पे भी मेंशन्ड है, हेयरिंग डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली रिकॉग्निशन करेंगे, अर्ली मतलब ईयरली चेकअप करेंगे, और स्पेशली पीपल जो हाइपरटेंसिव हैं, हाइपोथायरॉयड हैं, आई रियली feel that they should get themselves checked. एक PTA yearly करा लें, and अपने sugars once they go to the endocrinologist, एक PTA yearly करा लें, because early onset अगर changes हमारे पास वो आ जाएं, we can stop further progression. उनकी जो डिट्यूरिएशन है वो रोक सकते हैं, बट वंस वो लेट स्टेज पे आते हैं तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एट द एंड आई वुड जस्ट से अर्ली इंटरवेंशन इज बेटर देन अ डेफ एयर। तो थैंक यू सो मच। बैक टू आफाक साहब। थैंक यू साहब। सो डॉक्टर टीका, आपकी बारी, सो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। बस वो तो पौनन की मुझे तो इस डिसेबिलिटी के बारे में बस इतना ही पता है कि हमारे पास जब भी इस किस्म के पेशेंट आते थे तो बोस उस करा कोशिश ना ज्यादा तिमन अवॉइड करना, क्योंकि टाइम के मुझे टाइम बहुत लिमिटेड होता है और इन पेशेंट्स के साथ हमें टाइम ज्यादा लगता है। सो बोस करा कोशिश ना, ये आई यूज्ड टू रेफर देम टू गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। पता हो ऐसे अल्ताफ साहब 2-3 साल पहले जब अल्ताफ साहब यहाँ आए तो ये चोन क्लिनिक पूछन आपने कहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो ये क्लिनिक पे आए तो इनका पहला फर्स्ट थिंग वाज कि आपने क्लिनिक ऊपर बनाई है 3rd फ्लोर में, तो योर किसके खसन यमन हो लिमिटेड मोबिलिटी, रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी जिनको होगी वो ऊपर कैसे आएंगे। तो फर्स्ट थिंग ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू, हालांकि मुझे बहुत सारे पेशेंट्स बोलते थे
तो जो असल फैसिलिटी बनामत मगर यह जो 3 पोरस में यह गसा अजाब। तो उस दिन हमने फिर इरादा किया कि नहीं, हमें इस क्लिनिक में एक लिफ्ट लगाना पड़ेगा। और जब दूसरी बार अल्ताफ साहब आए तो मैंने अल्ताफ साहब को बोला आज आप आओ, हमने इसमें एक लिफ्ट लगवाई है। तो फिर एक लिफ्ट लग गई। तो he again started because he was on field he was working for these kind of people the योस एमसन स्पेशलिटी ये बड़ इनको अच्छा लगा। तो इनने फिर बोला कि वह क्या थो ईद खतर थो आख चेयर कर थो ईद खतर आख डेंटिस्ट एंगेज कर अगर बिजी छु कि जब भी ऐसे कोई लोग आए वो इनको केयर दे। तो हमारे पास एक वैन भी है एक एम्बुलेंस है। तो आज हमने इरादा किया कि इंशाल्लाह उसको हम डोमिसिलरी डेंटल के सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम एक डेंटिस्ट को एंगेज करेंगे। तो ये लोग यहाँ सर्दी की वजह से कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो केयर गिवर्स हैं वो बिजी होते हैं, वो अपने जॉब पे जाते हैं, कि हम किसी डेंटिस्ट को एंगेज करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून कि वो ये फोन करेंगे तो डेंटल वैन ही इनके घर जाएगी। तो बेसिक डेंटल केयर उनको घर में मिलेगा। तो जो स्पेशलाइज्ड केयर है वो हम क्लिनिक पे भी देंगे, वहाँ हम इसके लिए भी प्रोविजन रखेंगे इन कंसल्टेशन विद ऑल द एक्सपर्ट्स जो इस वक्त पैनल पे हैं। मुझे लगता है जो इस टाइप के ये होते हैं, हमें स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं, उनके ओरल हाइजीन और डेंटल के हेल्थ उनका सबसे ज्यादा इग्नोर्ड रहता है, क्योंकि उनको दूसरी प्रॉब्लम्स में वो हो जाते हैं बिजी। तो ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड फील्ड होता है उनका। तो ये तो सबसे अच्छा काम आपने किया अगर आपने ये सर्विस अपने यहाँ प्रोवाइड करेंगे। मतलब दिस विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन कश्मीर आई गेस। तो थम्स अप टू यू फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच। तो अल्लाह आपको और तरक्की दे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर बुरहान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने व्यूज हमारे सामने, ये प्रोस्थेटिक्स में है तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस आज के दिन के हिस्सा के मुताबिक इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर बुरहान। Thank you very much for inviting me over for this August gathering. Shukriya. Bismillahirrahmanirrahim. And Assalamu alaikum to all brothers and sisters here. The last World Disability Day, and this is the first time I'm joining my, Kashmiri fellows in such a occasion. Being in rehabilitation myself, I will just give a brief introduction first, what I do and what I am. My name is Burhan Dar, as you already mentioned, and I am an American board certified orthotist prosthetist, which is my specialty. A lot less people know actually what that means. It's that we use external devices to treat neuromusculoskeletal disorders and amputations. My specialty is prosthetics. That means people who have lost their limbs, to rehabilitate them with limbs and make them whole again. Rehabilitation, before we go to that, what is, it just comes from the term habilitation. Habilitation is fitting, fitting back into the society, fitting back into the environment. Rehabilitation obviously means just going back to where you were before, before the disability. So that's what the goal of the rehabilitation is, to just fit the person. The insan gets wapas into society, the environment, as much as possible, yet was. As Kamli Saab, you mentioned rightly, the word disabled is not a good word. It's a derogatory word now. I mean, it has been given up in the Western world. The word what we use now is differently able. Differently able means that these people, they have different ability. They have their own speciality, which does not match most of the people who call themselves whole. But definitely they are differently able, not disabled. They can do things in the sense that we cannot. As you mentioned, Hamza can do video editing better than me. Not only that, some people have gone to Mount Everest without legs. There are people, look, Mount Everest Oscar Pistorius, I don't know if you guys know, was an Olympian. He was contesting in Olympics, and just to encourage people like Hamza, and that one Olympian was necessary. Down I must even keen. I'm such a artificial links. He Pakistan could tears. I'm such a carbon fiber like it. But to things just was not to Tishun Tavan Kama to because Jatechnic it can't. I barabar.
and he was 4th or 5th, and he was 1.5 seconds before. The point I'm trying to make here is we have to be proud of our people, where we are today as human beings, where we are in the world. Technology has definitely extended, a lot of hope for people who are differently able. So there's everything to be happy about. There's no need to be, sad about it. There is nothing wrong with being differently able. Alhamdulillah. So main focus I want to talk about is factors that are important in managing, this disability. Especially in Kashmir, and I'm speaking from the perspective of Kashmir. I have had, because I practiced in California before coming to Saudi Arabia. Now I'm here for the last 10 years working as a head of the orthotic and prosthetic department in King Faisal Specialist Hospital. I should have mentioned that before, but here I am. So the point I'm trying to make here is, I have had an eye on the Western world and in the Middle East as well as in Kashmir, and it breaks my heart to see that we are lagging behind a lot when it comes to managing disability in Kashmir. And the reason that is there are two main factors. Environmental factor, I can call it. Physical barriers themselves are. Environmental factors, gar. So in garas, people around the person who we call disabled. How they are trained to manage with it, to deal with it. And tim cha sahi kara. Sorry for board examples, pneumonia insan doctors. When should we start taking this person to the doctor? When is it medical intervention necessary? Cerebral palsy and other some neuro disorders. Agar CR go, it could make a big difference. If you're not able to manage it in time, because the development, Kashmir, for example, autism. Autism is very common now. Autism is the point here. And that's when the development of the brain is taking place. Unfortunately, we're losing out a precious time. So these factors, education and understanding of the condition in home, issues are really, but training the family, that is very important. Society, these are, I'm still talking about the environmental factors here. As I mentioned, the timely medical intervention can make all the difference. But school, how his teachers are attending to him, how they are treating him, how his peers, how his students are treating him. As Kamli Saab said, we call people names. Why say the Kashmir were very common now? Mashallah, I cannot deny that. Obviously, so educate, you don't have to just only be knowing about the disabled person. You have to teach your kids. You cannot treat a person with some kind of a disability differently. You have to be respectful. You have to just show them respect. So this is important from the societal point of view. Teachers have to reinforce that. Friends have to reinforce that. Physical barriers. After environmental barriers, I think physical barriers are very important. Infrastructure. Physical disability, amputation, chest, musculoskeletal disorder, using them as much time darwazan much time stock walk much time using them mushkil chikara yim cheese. Pakistan is external environment, bus stops, ramps, wheelchairs, public toilets, are they equipped? These are some of the things that we take care of, invest a lot. Even these seem to be very petty things. But these are the things that ensure that this person can have a normal life. Because again, as barriers come, the hindrance to having a normal life is panika. Let me talk about the climate, the snow and all that. Poor East Coast, United States, or even Europe is very cold area. So, this is not something that is not common to Westerners also. But yeah, of course, Kashmir is totally different place altogether. Then you talked about the agitation, about political instability in Kashmir. Those are the factors. Those are the challenges. How can we cope with it? I think my view is, this is why the family has to take more responsibility. A family member should become a physical therapist, a doctor, per se. So they should have more role to play in this person's life than the external factor, which is the doctor in itself. So last but not the least, Dr. Diba will develop on जो mental health और psychiatry के हिसाब से उनका भी इसमें काफी experience है. तो मैंने सुना उन्होंने कुछ पेपर भी इस बारे में लिखा है. So let us.
इनका भी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम है डॉक्टर दीपा नज़ीर एंड मैं छु कंप्लीट कोरमुत एमडी साइकाइट्री फ्रॉम जीएमसी करंटली एट अभी आई एम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बादामवारी में जो लोकेटेड है अख चीज छु युस वेरी मतलब वारिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट छु अस छु कथ करान मतलब यहाँ जो टॉपिक है disabilities that are not visible अगर अस कथ करो पनन मतलब यीतः ते मैं psychiatric disabilities which या maximum they are not visible तिम मतलब अगर कहा विंकस तुम मे वो ये कथ करान यह ठीक मगर कंसी छन पाई वदर बस ठीक या बस न ठीक तो खास कर ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तिम छन आसान विजिबल कहीं फॉर एग्जांपल अस करो ये कथ यम फॉर एग्जांपली डिफरेंटली एबल्ड फॉर एग्जांपल कम्युनिकेटिव यमन हेयरिंग प्रॉब्लम या स्पीच प्रॉब्लम या यमन फिजिकल प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल डिस्ट्रोफीज या सेरेब्रल पैल्सी या मतलब यम ते फिजिकली डिसऑर्डर्स पत साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ते आसान या साइकाइट्रिक फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल सीवियर यम इंटेलेक्चुअल आसान यमन वारिया ज़्यादा मतलब अस करो कि सेजर या दिमाग कम आसान तिम अस पाई लगान अमिस आसि दिमाग कम मतलब मगर ये माइल्ड आसान तिम आसान सेकंड थर्ड क्लास तान वारिया नॉर्मल मतलब यूता अख बच्चो हेकि करित तम पत यमन प्रॉब्लम गछान एंड अंडरस्टैंडिंग यित चैलेंजेस बढ़ान फॉर एग्जांपल सिचुएशनल चैलेंजेस या पर्निक चैलेंजेस यमन डिफिकल्टी या फिर ब्याक फॉर अवेयरनेस फॉर एग्जांपल लर्निंग डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटी कह इंसान है पूरा नॉर्मल मतलब IQ है तमिस नॉर्मल मगर सो तमिस आसि रीडिंग डिफिकल्टी तमिस आसि राइटिंग डिफिकल्टी फॉर एग्जांपल अगर कह वन यह गिंदान असल अद हिसाब तुस असल पर्न विजि कह आसान या पर्न विजि वथान सेहत करान अच्छु ये समझुन अगर कंस पेरेंटस युत बच्चे यमिस A या B तो DS मज डिफरेंस पाई लगान कहीं B तो PS मज डिफरेंस पाई लगान कहीं तमिस है रीडिंग डिसऑर्डर या मतलब यमिस क्रैमिंग असल वारिया असल याद गसान राइम वारिया असल जल्दी याद करान मगर पत हेकान सु परित सु राइम येल तमिस वनान स पर हो सकता है तमिस आसि रीडिंग डिसऑर्डर सो हेक तम पर्नस मज गसान डिफिकल्टी तो यमन बच्चन जरूरी वुचन क्या अंदरी अंदरी सफर करान अड़ बच्चे यम राइटिंग मज ते असल रीडिंग मज ते असल तिमन हेकि प्रॉब्लम खाली मैथमेटिक्स मज असित तो यम डिसऑर्डर्स तिम यम निब्रकन अथ कहें तमिस बच्चस बिचारिस बुथिस पे लिखित कहें अमिस प्रॉब्लम इन रीडिंग या राइटिंग या अमिस मैथमेटिक्स कमजोर सह कित पाई लगान तमिस 100 मार्क्स इंग्लिश 100 मार्क्स सोशल स्टडीज मगर मैथमेटिक्स वो तमिस 10 नंबर अति वनान अमिस कमजोर गोड वुचन अमिस मज सह प्रॉब्लम अमिस अत ज्यादा तवज्जो दिन जरूरत या फॉर एग्जांपल गोडनेथ वनान मेंटल रिटार्डेशन यमिस कंस दिमाग कम वन वनान इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी गोड क्या करान गोड करान IQ असेसमेंट इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन गोड वुचान मतलब तमिक असल मतलब अपना तथ वर्बल टेस्ट नॉन वर्बल टेस्ट आसान परफॉर्मेंस टेस्ट आसान आज तमिस तक IQ वैल्यू तूता कि अस पृछान सोशो एडेप्टिव फंक्शनिंग किस यह हेकान पाने वथित बाथरूम हेकान गथित कत समझ तारान कि ना सोसाइटी मज कित आज तमिक सोशो एडेप्टिव फंक्शनिंग खोत आज हेर कंपेरेटिवली टू IQ असेसमेंट या यम ते साइकाइट्रिक डिसऑर्डर चाहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यथ मज इंसानस बेफजूल ख्याल दिमागस मज वथान तिम इन अथ कंसी हंदिस बुथिस पे लिखित अमिस ख्याल या यह आबस ज्यादा करान या अमिस कहीं चीज पेवान रिपीट तो रिपीट कर मगर अमिस डिसेबिलिटी ज्यादा अमिच प्रॉब्लम्स ज्यादा क्या यह हेकान बिचोर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीजन कोप अप कर कहीं वन करो कत नॉर्मल स्क्वेल करो कत फॉर एग्जांपल अभी मैं कुरुन त्यूता खुश मतलब हमजा की मैंने बातें सुनी तिहिंद फादर कामली सब वेरी मोटिवेटिंग या जितने भी हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर मतलब यू लर्न इथे कन मतलब बह वन डिसेबिलिटी फॉर एग्जांपल कंजेनाइटल डिसेबिलिटी सह जामत तिथु तम सज चैलेंजेस या फिर कंस गई एक्वायर्ड कि नॉर्मल अचानक
कस एक्सीडेंट से somebody lost his limb, तमिस गो zang या खुदा रचन कोई stroke या brain hemorrhage, speech गई loss, यम छ very differently इवान. For example, यमन patientन because सन acceptance छन मिलान किहिन. For example, अस छ हावान sympathy गो वाई ये बिचो. Normally अगर कह मे छु वारिया अमूमन being a psychiatrist या psychiatry में तिम छ आसान यहज बिचोर अगर हमसाय आस सद बह छस तमसी पृछान से क्या वोनुत बिचोर तु हेकक नॉर्मल ते वनित. तो शो एम्पैथी, फील करो अगर मैं आसहा ये चीज बह क्युथ करहा महसूस. अगर if I want to be treated like a queen, you have to treat other in that way. अगर बह छस यछान कहां गस मे सत वारिया अदब सत कथ करन बेकिस क्या छुना हक कि बह कर तमिस सत तिथ कन कथ, या अस अल्फाज तम इस्तेमाल करान यम अल्फाज दिलस वारिया बुर छ लगान. अस त छु पत बासान अस कोर कह गलत मगर तम अल्फाज कड़नी क्या छ बेकिस बुर लगे. क्या अगर तुम हेक बुर लगित तमिस ते हेके बुर लगित. फॉर एग्जांपल expressed emotion यिथ कन हमजा said नाबकार, शायद बह हेकहा न ये अल्फाज वनकस वनित मे यह न दिमागसी मज, बट डेफिनेटली एक्सप्रेस्ड इमोशंस. वारिया पेरेंट्स, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने पीछे से भी बोला, जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, वारिया पेरेंट्स वारिया मोटिवेटिंग. क्या तमन छु वारिया अड़न पेरेंट्स छ मे वुचमत इमन तीसा नॉलेज डिजीज की, मे छु वुचमत तिम तीता मोटिवेटिंग या तिहिन चैलेंज कित कन असल छ करान तम एक्सेप्ट. लेकिन अड़ पेरेंट्स छु वुचमत वेरी वारिया एक्सप्रेस्ड इमोशन छु न खाली मोहब्बत सत कथ करन. अगर कंसे ज्यादा मोहब्बत हाउ सु बच त छु पथ गसान. अगर कंसे क्रिटिकल कमेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल नाबकार छु च करख न किहिन, अगर तमिस बिचारिस के होप ते आसे कि बिकॉज ऑफ एनी डिसेबिलिटी या फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज में अगर पीछे हूं, अगर सु करन ती यछ मगर तमिस कुछ दी न करन क्या दिमागस मज वोन तमिस मले ज छुक नाबकार. तो दीज वर्ड्स मैटर. अपने वर्ड्स को चूज करो. अगर आप फॉर एग्जांपल कह बच्चे जहीन ति छु तमिस ते वनियो ना एक लट कि च हेकक न किहिन करत, तुई वुचो सु कूता पथ गस सु बच. तो यमन पेशेंटन छ डिप्रेशन. In case if me being I have done my MBBS, my MD, I know my struggles. मैं कुछ मेहनत कर या मैं कुछ मतलब फॉर एग्जांपल अगर बति कुन साथ मतलब मैं being a psychiatrist मैं छुन हक छप करित बहनो किहिन. मतलब फॉर एग्जांपल मैं ते है कि पनुन का क्लोज रिश्तेदार वनित वन टैबू हे च छक मतन इलाज करान छक पान गमुस मचई. फॉर एग्जांपल मैं छुन त्यूता हक बह हेक नॉर्मल पनुन एक्सप्रेशन लुकन हरित बह हेक न शरारत करित किहिन. मतलब मैं छुन हक है. And this is what I am like very blunt in मतलब this is true. People Periphery lack में empathy, basically. yes ये छु मगर अथ हेक न पेरिफ्री या स्टी करित किहिन. एम्पैथी इज एम्पैथी. अगर कंसे दिलस मज आसे नरम दिल आसे सो आस शहरुक डॉक्टर ते No, तुथई no, सास sorry, गामुक डॉक्टर ते sorry, तुथई. I won't, मैं I बता won't रही हूँ agree लोगों, that. I won't agree to that. नहीं मैं आपको I बता think रही it's हूँ, मैं बता रही हूँ. difficult when you meet someone. आपने हाँ definitely GMC में OPD में different लोग देखे होंगे. yes There's a बिल्कुल difference in opinion between someone from बिल्कुल Srinagar बिल्कुल. I and have someone living far-flung in Kangan. वो आपको नहीं मैं बोलेगा. बिल्कुल हाँ मैं उनके समझ approach रही में हूँ. difference Because होता है. approaches much difference, there is difference in the knowledge, there is difference in the exposure. क्या बिचोर छुन आसान Indeed, नेबर ड्रामुत किहिन तमिस छु indeed. डिफिकल्टी इवान. मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट यम तमेन दोस्त आसन या साइकाइट्री मज आसन श्रीनगरिक लुक छ मे वारिया कम. अगर मैं पनुन वन मे छ श्रीनगरिक लुक वारिया कम वुचमत गवर्नमेंट ओपीडी मज इवान कंपेयर्ड टू युस दूरिक. अगर बह वुच ना मतलब आई हैव सीन इट. तो अगर साइकाइट्री में छन पाई मतलब एसएमएचएस युस शाख जो ब्रांच थी सो मुझे लगता है उसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि भादमवारी आने से लोग डरते हैं. मतलब श्रीनगर वजह सॉरी टू मेंटल इंटरप्ट यू तय क्या बासान सो ट्रेंड गया चेंज कशीर मज निवान इथन पेशेंटन ज्यादातर पीरन बिल्कुल निश बिल्कुल बिल्कुल निवान दपान अमस खोचुन बिल्कुल. how do you feel, is there a अल्हम्दुलिल्लाह change? अल्हम्दुलिल्लाह यस मतलब ये छस बह बोजान पन्निन यम मे सीनियर छ. फॉर एग्जांपल हमारे बहुत मतलब बहुत सारे सीनियर्स मेरे तिम वनान हमारी जो ओपीडी खत्म होती थी 12 बजे खत्म होती थी. टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब यम
अच्छन 4 बज तान यम ते मे कलीग छन हेकान ओपीडी थोद वथित कहीं, इसका मतलब है अवेयरनेस आ गई है। इसका मतलब है पीपल आर कमिंग। इफ यू आर, हमें 200 प्लस एट टाइम्स 300 प्लस 350 प्लस हमने ओपीडीज देखी हैं, इसका मतलब है पीपल आर कमिंग, अवेयरनेस आ रही है लोगों में। दे नो कि मतलब फॉर एग्जांपल रूहानियत अपनी जगह है, लेकिन जो चीज साइकाइट्रिक है, फॉर एग्जांपल मतलब मैं डिसऑर्डर कहूंगी स्कीजोफ्रेनिया, सो ओल दोल कत करान गोडनिक आसान वन ति, मगर पेशेंट अगर हम बोलेंगे ना ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस या ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस, अगर बह वन ति पृछान अमिस कर उस सिम्टम स्टार्ट गोमुत तथ आसान वरी गोमुत। आप समझ रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस या इलनेस वन ति ज्यादा। अगर फॉर एग्जांपल यही चीज अगर फॉर एग्जांपल वन मेनिस फैमिली पाई, अगर खुदा रचन में बास गोडनिकी दोह कोई किसी को डिप्रेस्ड है कोई, इवन मैं डिप्रेस इज वेरी लाइक लेमैन टर्म, या मैं बास किसी का मूड अप्रोप्रिएट नहीं हूँ, मैं जाती हूँ पूछने व्हाट मतलब क्या छु क्या। अब अगर फॉर एग्जांपल आदों को मैं देखती हूँ तिमन आसान वरी गमुत, जबरी गमुत, त्रेवरी गमुत, अब वो निकल के आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नाउ दे आर नॉट एबल टू वर्क, तिम छन हेकान सोसाइटी मज रूजित कहिन। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग बहुत जल्दी सीख करते हैं बाहर हेल्प, कह इंटरनलाइज करान थिंग्स। फॉर एग्जांपल इन जो मैं कहूंगी जो हम जिनकी हम बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल यम पेशेंट यमन प्रॉब्लम आसान कोपिंग करने मज डे टू डे एक्टिविटीजन मज, ये हमें यम हेकन पन सिम्टम इंटरनलाइज कर, यह छु कि कह बच्चे है कि यमिस कह प्रॉब्लम हेयरिंग मज, या यमिस प्रॉब्लम स्पीच मज, या युस पकित हेकन सह हेक एकदम युस नॉर्मल एक्टिविटी करान, फॉर एग्जांपल सो अगर मालिस से 10 कथ करान तम हेत वन 5 कथ कर, यह इंटरवीन कर तम क्या कर कम कथ। फॉर एग्जांपल अगर तम आसन वनकस बोजान अख मतलब पेशेंट आव मे निश, मतलब फादरन वन यह कंप्लेंट कि मैडम यह थोड़ा छप कर बेहवान, मगर ये मैं इंटरवीन कोर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, मतलब सो तमिस फॉर एग्जांपल तमिस दिल तंग, लेकिन पेरेंट ने कहा कि ये बात कम करने लग गया है, थोड़ी सी बात, मतलब अगर सुगन्धित 100% उसके हिसाब से करता था तुम पर 75%, तो मतलब कितने अच्छे पेरेंट है जिसने ये नोटिस किया। अब मैंने कहा बच आसान, फॉर एग्जाम्पल जो सर ने कहा ही स्टार्टेड शाउटिंग, कोई डर के मारे शाउट कर सकता है, वन हे असी पान खोजान क्या गो बथ पृछो तमिस क्या दलील, कोई एक्सटर्नलाइज करता है, एक्सटर्नलाइज है पन एंगर कर, फॉर एग्जांपल कोई नहीं सुन रहा है, जो कि उवैस डॉक्टर उवैस ने भी बोला कि उनको डिप्रेशन में जाते हैं, जरूरी नहीं है डिप्रेशन वाला सिर्फ चुप करेगा आंसू बहाएगा कोने में बैठ सकता है, कहाँ है कि इरिटेबल ति गछित, कहाँ है कि वापस जवाब देत, कहीं गि पर्सनैलिटी यूजुअली एल्डरली में देखते तुम तेज गछान, हे यह वनान बड़ टिठ्योमुत, they don't know what is going because that And it affects person their जो family as it is. बिल्कुल बिल्कुल पूरे फैमिली को बिकॉज इफेक्ट अच्छा करता है। मैं आसान एक चीज मेंटली सबसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक कि हम कैसे, मतलब हमें एज अ सोसाइटी कैसे, मतलब जैसे एनजीओज हैं हम काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट हमें ऑफ क्या ऑल करना चाहिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, वो मतलब ये जो किस आपने किस टाइप के इनिशिएटिव प्रोग्राम लिया करने है, चाहिए? गिव अस ये सम वाला जो टिप्स, गिव अस इनिशिएटिव, सम। बिल्कुल ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, लाइक मुझे नहीं पता ऑनलाइन कितने देख रहे हैं, हो सकता है आसन वुछान सीरियसली या 3 आसन वुछान, तिहुंदी 3 अगर 3 हुन घर अगर वुछाओ कितना लुक गसन आबाद, उन्हीं की 3, अगर हम 3 लोगों की सोच भी बदल सकते हैं इससे कि यम ते इंसान सिर्फ कथ कलाम हेचिन, या फॉर एग्जांपल एसआरओ जो कर रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म इज वेरी लाइक इस वक्त कोविड टाइम्स में जो ही एक प्लेटफॉर्म है दैट इज सोशल, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं हम इसके बारे में, फॉर एग्जांपल हमजा को देखकर कितने सेरेब्रल पैल्सी वाले पेरेंट्स को हिम्मत मिली होगी, कामरी साहब की बातें सुन के कितने लोगों को लगा होगा कि हमें अपने बच्चे को नाबकार नहीं बोलना चाहिए, अगर एक पेरेंट ने भी ये चीज लाई, उस एक बच्चे की जिंदगी हम बचा सकते हैं। अच्छुन वुछन इस मैक्सिमम ऑडियंस करो कवर, इसके करो हमजा Afaq आपका Sab, वो कवर। what कोट I है, हमजा feel, आई एम सॉरी Afaq टू Sab, इंटरप्ट, हमजा Afaq Sab, what हमजा I आपका feel, कोट गिव मी अ चांस टू प्रूव माय एबिलिटी, ये तो पूरा Yes. वायरल हो चुका है इस This is what बिल्कुल happened. बिल्कुल Afaq आई Sab, Actually, एम what सो I feel, I think sorry. what I feel, this platform where we could interact with our seniors overseas, unka perspective, hamara perspective. This is a wonderful platform because abhi this is the only platform we get, that is Zoom. So our seniors who are overseas giving their expertise, how we can utilize their expertise in Kashmir, because as I already said, I'm not a pessimist, I'm an optimistic person, right?
and I didn't want them to get this impression कि मैं उनको बोल रहा था यहाँ हालात खराब No, है, no, यहाँ no, वो नहीं है. no, बिल्कुल But नहीं I की. am, First of all, मैं sorry सर to को यही interrupt you. बोलना चाहता हूँ, we are trying to Yeah, do our best with whatever just resources we got to help our people. absolutely. I Sorry, say sorry. something, Just Altaf, I just want to say okay. something really. I know I'm Okay. sorry about this, but Owais Sab, I think Yes, it's sir. my personal belief. I think we give less credit to our people than they are due. Okay, so cell phone, which the one guy from Bakrawal, he has a YouTube channel and he is selling his music through it. So the times have changed. It's like मैंने हमेशा कश्मीर में देखा क्या है ये तिशुने आंधी ये तन्नी किन मगर because of this Absolutely, yeah. start Yeah. होना मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहूंगा. हम जब ये प्रोग्राम डिवाइस कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि कौन कौन से एड्स लाएं हम. जैसे फॉर एग्जांपल नाबीना लोग हैं, नाबीना खतर क्या आना यमन ते डिस्ट्रीब्यूटर निश गए सारी वोन दोपुक तिमन खतर स्मार्ट स्टिक वो वाइब्रेट करती है, उसमें थोड़ा बहुत रिफ्लेक्टर होता है, अगर आगे से गाड़ी है उसको पता चले आगे नाबीना चल रहा है. लेकिन जब फिर हम नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, उनके जब जोमा के साथ हम बात की तो मैं बोन मतलब एसोसिएट कर प्रोग्राम अच्छा स्टिक्स स्मार्ट स्टिक्स खतर बुक स्मार्ट स्टिक्स. We don't give smart sticks to our people now, our students now. आप स्मार्टफोन्स दीजिए. We are teaching our these जो नाबीना लोग हैं तिमन हेचनावान how to use smartphone. तो तुम क्या करो ना इस मशवर दपो तो जमीन मशवर स्टिक पिट करने. ये तो मामूली सी बात है, ये तो हम वो खुद लाते हैं ये 1500-1600 की स्टिक. आपको स्मार्टफोन लानी चाहिए. हमने फिर उनको वादा किया इंशाल्लाह. मतलब आई वाज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट एक स्मार्टफोन की वजह से एक जो ये things have changed. impaired person है उसको तो Yeah, काफी absolutely. ये तो एक हाथ में उनको एक सेक्रेटरी सा मिल गया. He can talk back. Afaq Saab, I was actually All happy place. because dealing with the audiology section, I was really happy. आपका मैंने page देखा, a little kid was given a hearing aid, and the smile you could see, it was fantastic. What? Yeah, absolutely. 10 मिनट I have पहले not वो shared कुछ नहीं his सुन रहा we था. have not shared his 10 video. मिनट बाद वीडियो में he हमने could उससे hear पूछा है. everything. वीडियो And में sir, हमने उससे I would पूछा tell है you, बोझा I वहीं would and tell he you, was so happy. Sorry, Nichu, sorry. Can I personally, I have put? personally seen. Yeah, absolutely. I saw that photo as well. It's really inspirational, and that is actually how we can, start. When you say कि मतलब you have reservations, you think yeah, sketch but karo start. I started many projects from scratch, zero, nothing was there. Okay, and I always believed that you need this first this is very important, and that is all in your mind. You don't need, for example, if I go, if I have a chance, maybe I can go, and sometimes I think I should go to Kashmir and try to do something for my people, but there are external influences that will hamper whatever you think. But there are many things that don't need outside. For example, Hamid serves you. I mean, whatever he said is his perspective, and for example, agar bya ka parent nahi won, he might have discouraged him. He might not have provided a smartphone. So it is like starting from the home, trying to give these people a chance to prove their ability, and trying to facilitate whatever things we can. It's not necessary that we make a wholesale change, and that is not possible. That is not practical. Is banao UK model Kashmir as but what other things that we can do? Raise awareness, as Dr. Deepa correctly said. Agar Zinafar Asanna, I don't mind. I mean, I don't want an audience of 500 people. Agar Zinafar Asanna, and I am able to change their attitude, that is a success for me. Agar Zinafar Asan, and then eventually it will rollover effect, and then we can have a wholesale change in the society. We can actually, the first thing is actually to raise the awareness, and then we can change the attitudes after that. Thank you. Last but not least, हमजा एक बार फिर अपना YouTube चैनल हमें हमारे साथ शेयर करेंगे. YouTube चैनल का वो एड्रेस, IP एड्रेस, और हमजा को एक मौका और. हमजा, आपका जो कोट है ना, मतलब really give me a chance to prove my ability. Hamza, it was a pleasure listening to you. Seriously, I am really honored to be part of this program where young boys such as yourself were part of it. And Kamli Saab, hats off. Really, hats off to you. Really. Hamza Saab, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Do you want to add something more? Yes, I want to add a little bit. I want to say that my biggest support and motivation is my father, and of course my
my whole family. अगर उनको मुझ पे भरोसा नहीं होता तो आज मैं यूट्यूबर नहीं होता, क्योंकि जो पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, you have to have taste. So that was the conference. I want to thank them for letting me use the video. So let me know how can we help people open their mind to disabilities. And if this video will get over 6,000 views in 2 months, I will take some of you and we will discuss about any topic, but that video will be live on YouTube. So that's all for now. I want to thank you all for watching, and if you use Instagram, Facebook and Twitter, follow me on all. The links will be in the description below. Take care and have a nice day.